Okay. Good morning, all. I am Professor Yogesh Likhar, Assistant Professor, Electrical Engineering Department from Guru Nanak Institutions. I welcome all the participants for this 2 days workshop on Revit MEP. Now, I request Professor R.M. Bombay, Head Electrical Engineering Department, to enlighten our participants with few words and inaugurate the session. Bombay, sir? Hello, I am audible. Yes, sir. I welcome all participants for 2 days workshop on Revit MEP. You all know that Autodesk Revit MEP is a building information modeling BIM software created by Autodesk for professionals who work in MEP engineering. MEP stands for mechanical, electrical and plumbing, which are the three engineering disciplines that are addressed by Revit MEP. Earlier it is AutoCAD MEP. Now we are using Revit MEP. MEP software is a subset of CAD software that is specially designed for users in the mechanical, electrical or plumbing fields to improve the overall design of their projects. Today we have resource person Mr. Nandakumar Mahajan, who is the owner of Institute of Architectural Graphics, Sadar Nagpur. He is well-known expert and having more than 10 experience in Autodesk software. I request all of you, all participants, to attend this 2 days workshop and take the maximum benefits of this workshop. Thank you. Thank you, Bhumi sir, for these words. Now I would like to take privilege to introduce our today's resource person for this workshop, Mr. Nand Kumar Mahajan sir from Institute of Architecture Graphics, Southern Nagpur. He is a civil engineer by profession. Institute of Architecture Graphics is a well-known organization in the field of updating students and professionals' knowledge with latest software, that is AutoCAD, Revit Architecture, Revit MEP, Revit Structure, Stat Pro, Stat Tabs, 3ds Max, etc. Mahajan sir worked in government and private contractship from 1988 to 2000. He was associated with various reputed organizations such as College of Architecture Nagpur, Government Polytechnic College, RTM University Nagpur, etc. IAG is authorized Autodesk trainer partner since 2017. Authorized certified Certiport Examination Center since 2017. He is also IBM consultant of PWT for architecture and structure and green building. He is Autodesk certified professional in AutoCAD, Revit, Architecture, Revit, MEP, Electrical, Revit, MEP, etc. Having experience in building information modeling concept LOD 350 and IBM 360. Now, I would like to invite Nan Kumar sir for organizing this workshop. Thank you. Hello students, hello sir, good morning to all. Thank you GNIT management as well as the Bombay sir and Likhar sir giving me an opportunity to deliver this webinar on Revit MEP. I hope all are doing great in this COVID-19 situation. Before starting this webinar, I will like all of the students, I would like to request all of the students, please switch off your cameras and your audios. Actually, this 2 day session, which is about Revit MEP, as earlier Likhar sir told you everyone, that this is all about basically mechanical, electrical, plumbing. In this area, you will be actually planning, designing and creating output about the BIM. Actually, what is meant by BIM? Building information modeling. Now,
these three branches will be involved in this BIM. When there is some residential or commercial structures, there will be core engineering involved, like civil engineering, electrical basically the name is building information modeling. But all these three engineers from these branches can work in this field. In this new concept, actually there are 2 to 3 new USA based companies in Nagpur, based in Nagpur, and outsource works from the USA or the Western countries they are doing here on this Nagpur platform. They have got like 4 departments: architecture, civil for structure, electrical and mechanical. So this is the new area where electrical or mechanical engineers can get a job. Now in world, the BIM software, the software used for BIM, out of which 70% softwares are used from Autodesk platform, and that is the main platform is Revit. Other than this 70%, there will be like the Bentley softwares. Now, what is this concept BIM, building information modeling? Like, first of all, I will have to actually we will be doing some actual work, practical work on the Revit MEP in 5 minutes. First of all, till now I am not showing anything. I will be showing my screen in 5 minutes. Till then, I will be explaining the BIM concept. Actually, what is meant by BIM? BIM means building information modeling. And what will we do if your campus engineering college campus is going to be planned and designed, or the malls are designed? Then architect will basically just create a mass. Like if you are creating your campus, then there will be department like civil, electrical, mechanical. So he'll be planning for the mass with the floors. That will be called as the LOD 100, just a mass. Then he will create a plan, accommodation, and everything. That will be called as the LOD 200. That is the architecture part. Then what? Then LOD 300, all planning, then aesthetic view, elevations will be created, and LOD 350. In LOD 350, you will generate all documents like planning, working drawing, execution drawing, as well as the quantity survey. Now what? Actually, all this output will be same for architecture, structure, and MEP also. Once the architecture model is ready, that will be placed on a Revit sharing monitor. Then structural design will come in a picture, come in a play, and he will design the structural component of it. As soon as this whole structural component with architectural component is ready, he will place all this model again on a Revit working share monitor, where electrical, mechanical, and plumbing engineers will do their work, so that there will not be a clash detection, like some pipes are going, electrical cables are going, HVAC ducting is going. That should not clash with the basically column structural component and all that. That's why these all things are done before going for a construction. Now I will be showing my screen. I will be presenting my screen. So what is this Revit basically? Revit basically means. Now this is the screen. Actually, I hope that most of the students have installed the Revit software on their systems. Unfortunately, if someone could not download it because of not having that computer and laptop, they can at least learn, listen and learn and get aware to this basic platform Revit MEP. So if you can see my screen, then please let me someone write here that you can see my screen here. Please let one know me. So he can write on a chart that he can see my screen. If even, please let me know. Visible, sir? Okay, then good. Now this is the basically Revit platform. Actually this is a startup screen. Actually, this is a startup screen.
You can hear me clearly? Please let me know. If you can hear me clearly, please let me know. Yes, you can hear me. Then good. Now this is my. Sometimes my net, if net issue is there, there will be some hurdles. So I'll be immediately rejoining the screen. So be patient at that time. Sometimes it may happens. Now this is the architectural sorry, this is the Revit screen in which you will find the architectural template, mechanical template, plumbing template, as well as the electrical template. So this is the startup screen. And now there is a actually architecture plan which is ready with me. And first of all, today I'll be explaining the HVAC concept as well as the plumbing concept. Tomorrow we will add electrical component to it, because electrical loads can be calculated when all HVAC components are there as well as all electrical fixtures are there. So first of all, we will have to go for the HVAC component, plumbing component, so that then you can add your electrical features here also. Now I'll be opening this mechanical default template to add the actually HVAC components here. My screen is opening. My voice is clear or not? Please let me know once. Yes, sir, it's clear. You can continue. Okay, thank you. Thank you. So my screen is opening basically. So just patience, have a patience. Okay. Now this actually, if you can see, this is the basically Revit architecture, Revit screen. This is architectural area, this is structural area, this is steel area, and this is MEP area. You can say this is system in which you can say HVAC, then fabrication, plumbing, and the area here you can see the electrical components also here. So in today's sessions, first of all, we'll start with HVAC. But before that, there should be a plan, architecture plan of any building here. So I will be basically linking the file, which is Revit file. So I will be importing here, linking rather you can say, the basically. First of all, I will like to show you that architectural building. So this is the basically architectural building here. Okay. So you can see like this is a structure, architectural structure, architectural component. This is basically, you can see wireframe. There are some rooms there, and in top view, you can see this room is divided for HVAC purpose. Now this is living room with this some area 573 square feet, and this is the HVAC pipes and the main unit here. This you can say this is a mechanical equipment for the distribution of the CFM here, and these are some grills here. So this is veranda. These are some rooms. They have got some specific areas here. Like this is a 143 square feet. This is 143 square. This is 134. Actually, the thumb rule is that when you are designing for the 100 square feet area, you will be requiring the 100 CFM flow to cool or to heat that room. Suppose this is the room, this is with the 127 square feet. So you will be needing here actually close to 150 liter per second or 150 or 127 CFM cubic feet per minute flow. So these are the n number of rooms here. They have got the different areas, and before designing that, you should know the basic concept that what will be the required CFM cubic feet per minute flow to cool or to heat that room or that space. So I have taken this plan, and you can see there are rooms and there is a piping also and the mechanical equipment also. Likewise, there are some supply diffuser also. These are the supply diffusers.
This is actually the grill from which you can spread the distribute that flow here. Actually, these are some component of HVAC, like mechanical development. Now this is the plan of some floor, like there will be the n number of floors. This will connect it through some ducting, vertical ducting, that all will be connected to AHU, air handling unit, that will be at the top, which will be giving the source of CFM to all of the floors via this mechanical equipment. This is called as VAV unit. This will be distributing the flow coming from the actually AHU unit. As you can see, there is a supply diffuser. If this area, actually there is a equation, like if this room is some one person is using this room, then this 143 square feet will be requiring their 150 CFM. But if this is a hall and 10 people are here, so this will be there will be an occupancy method. This will be an area method, but this will be an occupancy method. One person will be requiring something actually 50 to 60 square feet with the 20 CFM minimum CFO. So in this area, there will be requiring a basically maximum CFM here, as if number of people are more there, and this software can analyze it. Actually, if these walls are applied with some thermal properties material, then you can go for the energy analysis, and Revit can analyze the green building components with the sun path and your location on this earth. So in Revit, you can plan and design up to 7D basically. So till now, I think this is the basically introduction or knowledge about this Revit MEP. Now this is 3D architectural house. Now this is architectural default template. I will be closing this one, and then I will be inserting this on a Revit MEP platform. For designing of HVAC. Now I am closing this one. I am opening the mechanical template. Revit itself consists all of these platforms in one software. Architect, civil engineer, mechanical engineer, electrical engineer can work on the same platform. अगर आप electrical engineering की बात करें, so 50% jobs which you are having in an IT application area, of that 50%, 50% you will be getting the job in BIM. So this is new area where you can get the jobs. So I will be creating a unit system here, and this will be like meter. Now I will be inserting that Revit architectural drawing here on this platform, which will be actually single entity alien here. Now this is the platform on which I am going to create HVAC things. Now I know please switch off your audios and cameras. Please switch off your camera. Amit, Parbate, Chandu Katre, please switch off your cameras. Please switch off your cameras and audio also. Now on this platform, actually this is a single entity, and which I will be making this room boarding. So to create a space volume so that your CFM will be calculated here. Now this whole room is like a volume. This is a space. Okay. So now I will be inserting the supply diffusers here. Now this is a air terminal through which you can distribute a flow. This is air terminal basically. This is supply diffuser. Now there are actually 24 by 24 phase 12 by 2
supply diffuser. So basically this 12 by 2 will be the basic connection. 24 by 24 is 2 feet by 2 feet will be the area through which will be distributing the flow. Now I will just go on applying here this particular supply diffusers. These are the components of HVAC. This can be inserted like this. Okay, now there will be one more here. Now in actual our buildings that you can place that parallel to a horizontal plane, or there can be a grills on a vertical planes also. For time being now, I'm just inserting it, that is it is giving downward directions flow. Okay, in front view you can see they are placed on a platform, basic platform. I will go and selecting this. I will say select all instances. Now they are all selected here. Radha Bhavanwade, stop your screen presentation. Now I will be moving this to upward. So this is offset. Now I will be moving to 2.4 meter. Mainly this is the ceiling area from where you can see that there you will find the supply diffusers here. In this I will be showing you like in a shaded view. You can see these are the supply diffuser. These are not only 3D models, they have got the mechanical properties assigned to it. They have got the, now you can see this one. You can see in these properties, this is placed at a 2.4 meter. Like in the south, you can see there are the levels like building. Student, please stop your screen presentation. Try to be a professionals. Actually, these are the supply diffusers, and you can see this is placed basically what I was explaining. This is the building zone where this is ground level and this is first floor level. Now your ceiling must be at a 7 feet or 2.1 meter from this floor. So they are placed on a ceilings basically. Now you can see they have got the height as well as they have got the mechanical properties also. You can see there is a pressure drop as well as the flow CFM, that is cubic feet per minute flow. So 500 CFM is actually they have got the same CFM, but as I know, I can go to this area and I can convert this to a rooms. So I'll let you know how they are converted to room. Actually, you can find the areas here by tagging it. Room areas also. Now I'll be assigning room zone here. Now these are the areas of particular space. Actually in these areas, no, there is actually bathroom and washroom area. So you can see this is 576, this is 126. So I will be selecting this thing, supply diffuser. I'll be change the CFM, basically that is 500 CFM. I'll close that and I will make it like a 135 or something. So this supply diffuser is now having the flow of 135 cm. Again, I will go to this and I will select this. Most of these are at least 140 cm. So this will be like again 150 cm. Close 90% or 100% you can say. This will be the supply diffuser with again 150 cm. And now this will be again like 135 cm, CFM, sorry. And this will be like this area is 572. So this will be like 650 cm, CFM. Now I'll close this room
as a height category. Now these are all different supply diffuser with some different CFM. So I have generated the supply diffusers here, and I will be connecting this with the duct and the mechanical equipment. Now I'll again go to the mechanical, and now I'll create some system here. Before that, I'll be applying here the VAV unit, which we can find in system. There are the mechanical equipments, which are the distribution equipment basically, and these are called as VAV unit, parallel fan powered units. For this area, actually, I may need 10 inches or 8 inches. I may need the two VAV units, but I am going for the 8-inch units. So, like I will be inserting somewhere here. Now you can see, always that is placed on a ground level. In south view, you can see. Hello. Can you hear me now? Yes, sir. Okay. So this is actually always placed on a ground level. So I will be selecting this. I will place, that will be above the supply diffuser basically. Because अगर यहाँ से कोई डक्ट आ रहा है तो उसको मोल्ड होके यहाँ सप्लाई डिफ्यूजर तक आने के लिए हम लोगों को उसको उसके ऊपर रखना पड़ेगा, और दोनों का डिफरेंस जो है कम से कम 2.5 से 3 फीट होता है. So I will be placing this as a 3 meter. In south view, you can see that this is placed at a 3 meter. You can see the offset 3 meter, whereas this supply diffusers are at the 2.4 meter. For time being, I will be selecting this all, and I will give it the height as a 2.17 meter only. In mechanical view, now this is a VAV unit. These are the supply diffusers. Now I'll be attaching the ducts here. So duct is having some like 12 inches by 12 inches. For timing, I'm taking it as it is. So select this. Now there are the three things which are attached to the mechanical equipments. This will be a in. In means what? Inflow, that which is coming from the AHU. The size of that is 16 inches by 4 inches. This is again the in. This will be for the return diffusers. If your area is too large and there will be a CO2 in more quantity, so the rooms, that particular CO2 will be going through this return diffuser. Now this is supply diffuser. I'll show the return diffuser also. So this is return diffuser inflow. This is AHU units inflow, whereas this is outflow, and this will be the connection from the electrical units to cool this thing. So this will be cooling connection. Now this output should be in this direction. So I will be rotating this in 180 degrees. Now you can see this is rotated. If you select this, actually these are the families. Like Revit architecture, there is a Revit family. For different HVAC companies, there will be a different components and different families. So that families you can buy or create on this platform also. And it will be like a theoretical all calculations. You will be getting the exact, accurate, appropriate calculations, including the energy analysis also. So this is actual virtual unit, you can say. So if I click here and say draw duct, so 12 inches by 12 inches duct I'm creating here. Now you can see in 3D that the duct is created here from that output. So till now, any issue? Can you see? Can you hear me? Yes, sir. Okay. Thank you. After 10 minutes, those who are having some systems with them, please let me know so that I will allow you to practice on that particular platform. So mechanical, now I can be creating the sub branches from here by create similar. If you go here and click this to the supply diffusers, you can see it's a very smart software. The connection is created by itself. Can you see?
for timing this whole entity of architectural component, I am hiding this so that it should not create a problem. If you can see here, actually this is a component rectangular transition, वो उसने खुद को बना लिया, मैंने जैसे क्रिएट किया तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर टी भी बन गया. सेम वे आई कैन कम हियर and I can click plus so that one more pipe can be connected here from this connection to this supply diffuser. Likewise, I will be creating the same ducts using the platform. So this way, I will applying these things on this platform. In 3D, you can see वो सब खुद ही कनेक्शंस कैसे खुद ही लेता है, देख लो अभी वहां पे सप्लाई डिफ्यूजर का ये डक्ट राउंड शेप, यहाँ का कनेक्शन, यहाँ का कनेक्शन, उसने सब कुछ खुद ही बना लिया उसने वहां पे. Now what? Now I have created all supply diffuser and the flow actually coming from this VA unit, and now these are the branches. And this individual CFM, this is 650 because I have applied that to it. This is as room wise requirement. I have assigned a different CFM to different supply diffusers. Now what? Now I can actually calculate, software can calculate the total. Now this is the VU units. Basically this is the offset, this is pressure drop at that units, and now actually you can see the supply airflow is by default 1855 APM. Actually this is not required here, but still it is to be calculated. Now I will go for annotate and I will go for the duct legend, which software will be calculating the actual flow from these V units. Now I have to calculate the color schemes flow. So I'll say okay. Now it's calculating. Now you can see basically this is the 18550 total CFM, and this is actually you can see here. So in this blue color, the 130 CFM, as this is a branch going there. But for the red, you can see 650 CFM is going there, and total required CFM is 1855 CFM, which is calculated by software itself as per requirement of that space or volume, you can say. This is the green, from where you can see that actually this is the main pipe. Now what? If I want to calculate the sizes of that ducting, I can go selecting this, I can go to duct and pipe sizing. Now for velocity or the velocity with the friction, I can calculate the sizes also. Now you can see here, this is the main pipe. Actually, I will have to go selecting this all in it so that everything is calculated here, calculate here. Okay, so this way it can calculate the sizes of pipe duct size also. There is one more thing, you can actually go here and select this, and if you go there, there will be one more thing that is called a system inspector. You can see, you can actually select this, finish this, inspect. You can go here, you can see the flow, how it is going, and you can click here, and that will be showing you the total flow here, static pressure, as well as the pressure loss. It will be changing pipe wise. So this way I can use the HVAC element to click this one. Now if there is one more flow and I want to copy this all to second floor, again I can click this one, and I can basically
If I select this one, I can copy this one and paste to align selected level at the level 2. So one more section is created here, you can see. And now these two things will be connected to each other via vertical pipe, which will be going to AHU unit on the top of the floor. Okay, so this is the basically mechanical diffusers, sorry, supply diffusers. Now I will go on to connect the basically thing called as return diffuser also. This was the supply diffuser. There is a return diffuser also. This is the return diffuser. Now this will be a return diffuser here. Now what? I will be creating one more duct here, which will be like for return diffusers. Create similar. This is एक्चुअली मैंने इसमें गलती किया है और वो मैसेज दे रहा है कि हमारा सप्लाई डिफ्यूजर देखो नीचे आ गया है, तो मैं दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और अभी हाइट बढ़ा देता हूँ तो अपने आप में ऊपर ले लेगा। रिटर्न डिफ्यूजर की हाइट मैंने गलत रखा है, दोनों की हाइट अलग अलग जगह पर रहेंगी, तो ये अभी 2.4 पे समथिंग लेते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि सो दैट दे शुड नॉट क्लैश विथ ईच अदर। एंड यहाँ पे जो है इन है, यहाँ पे इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ से एक डग तैयार करता हूँ जो इधर जाएगा। एंड नाउ आई विल बी कनेक्टिंग दिस टू थिंग्स। इफ आई सिलेक्ट बोथ, देयर मे बी लाइक राउटिंग सॉल्यूशंस इफ पॉसिबल। वो खुद ही करता है, देखो उसने खुद करने की कोशिश की। तो अभी फिलहाल जो है इसको स्ट्रेट रखते हैं हम लोग ऐसे और इसको ड्रैग करते हैं। देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ कुछ नहीं किया, उसने खुद ही किया। देखो मैंने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कोई कनेक्ट इन्फॉर्मेशन मांग रहा है तो मैंने ये पाइप की दे दिया, उसने खुद यहाँ पे ले लिया। नाउ यू कैन सी बेसिकली these are the return diffuser which are connected to this return diffusers zone. These are the supply diffusers. And one more thing, you can add this तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कुछ समझ में आ गया है। तो ये पार्ट तो आपके समझ में आ गया। अभी अगर सबके पास में अगर वो लैपटॉप में या पीसी में लोड है तो प्लीज लेट मी नो सो दैट यू कैन गो फॉर अ प्रैक्टिस। यहाँ पे मुझे चार्ट पे बताओ कि कितने कितने लोगों के पास यहाँ पे पीसी अवेलेबल है करके। Let me know that you are having the systems or not, yes or no, whatever it is. जिनके पास नहीं है unfortunately कोई problem नहीं है, at least you come to know, you will be having the knowledge of this new zone, new area. ये कौन मैडम है बार बार, राधा बावन बड़े कौन मैडम है ये बार बार आप स्क्रीन शेयर कर रहे हैं? अभी 4 महीने हो गए कोविड शुरू के, इतने सारे वेबिनार्स हो गए, हम लोगों का हमारा गैजेट भी हैंडल नहीं करते आएगा तो कैसे चलेगा? Will you like to go for a practice session for 10 minutes? Please let me know. अभी यहाँ तक इसमें एक ही जन ने मुझे दोस्त जो नहीं सर मेरे को यस सर करके यहाँ पे प्रॉब्लम किया है। या मुझे ये बताइए कि मैं पूरा वो उसका एचवीसी का ही और प्लम्बिंग का ही समझा दूं।
लिकर सर, आर यू प्रेजेंट देयर? Yes, sir. सर मुझे सिर्फ ये कभी डिसाइड करना है कि कितने लोग, मैं शैल प्रोसीड मैं प्रेजेंटेशन और समवन इज गोइंग फॉर प्रैक्टिस। एक थोड़ा सा मैं थोड़ा कंफ्यूज हुई उसमें। आप डिसीजन लेके मुझे बताओ। Sir, you can continue with the presentation. I think only 6 to 7 students have the PC. ओके सर, नो इशू। तो मैं अभी एक काम करता हूँ, जैसे मैंने इसका पार्ट बता दिया, अपने क्या बोलते हैं एचवीसी का पार्ट हो गया मेरा। और उसके बाद में अभी जो है मैं एक थोड़ा ग्रीन एनर्जी का उनको एनालिसिस करके देता हूँ यहाँ पे। ओके सर, यानी सेकेंड हाफ में या तो हम उन लोगों को प्रिपेयर होने के लिए बोल देंगे जिनके पास पीसी है, तो सेकेंड हाफ में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। हाँ सर, अनफॉर्चुनेटली किसी लोगों के पास नहीं होगा या उनको डाउनलोड कर नहीं पाए होंगे। अदरवाइज मेरा पर्पस ये रहता है हमेशा कि भले ही वो थोड़ा सा करे प्रैक्टिस, लेकिन 20-30% करेंगे तो उनको उसका फायदा होगा करके। यस सर, वो तो है। नहीं तो क्या है, सिर्फ वेबिनार सिर्फ प्रेजेंटेशन करके रह जाता है, उसमें फिर किसी को कुछ खास फायदा नहीं होता। एनीवेज, ओके, वी कैन हाँ प्रैक्टिस इन सेकंड सेशन। बिल्कुल 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 ठीक है। मैं अभी काम करता हूँ, उनको प्रैक्टिस सेकंड सेशन के लिए बोलता हूँ, और मैं ग्रीन बिल्डिंग का उनको एनर्जी एनालिसिस बताता हूँ। अभी इसी में मैं ग्रीन बिल्डिंग का एनर्जी एनालिसिस बताता हूँ। ठीक है सर। Now, as we know that this is the residential building, basically, which is divided into some space volume areas, you can say. In mechanical, there is a analyze thing. What is meant by analysis? You can convert this to space and zones. Like if I want to create a zone of these two things, zone of these things, and this is a single zone. First of all, I will have to create the spaces here, so that अगर हम लोग इसको, जैसे मैंने बिल्डिंग को आगे थर्मल प्रॉपर्टीज लगाया है, तो हमारा जो लोकेशन है और वो सन का जो पाथ है, तो ये बिल्डिंग को हीटिंग और कूलिंग के लिए क्या लोड और सीएफएल लगने वाला है, ये खुद सॉफ्टवेयर डिसाइड करता है। वो कैसे करता है मैं बताता हूँ। दिस इज स्पेस, आई विल बी क्रिएटिंग दिस टू स्पेस, लाइक दिस इज स्पेस, दिस इज डिफरेंट स्पेस। रूम्स अलग थे, स्पेसेस अलग है, रूम्स वॉल्यूम थे। Now I will be hiding this room zone. Now you can find there are the spaces. Now selecting this, I can create a zone of this also. I will be creating zone of this, this, and this. I will finish this. Now you can see there is a line between three spaces. Means this is the zone created of three spaces. Now I will be again creating a zone of this room and this room. Finish. Now you can see, sorry, I have to again go to analyze, and I have to go to zoom. Finish. Now this is actually, if their line is there, so the one more zone is created with these two spaces, and one more zone is created with three spaces. Now this will be a single zone. Okay. अभी हमने यहाँ पे 3 जोन तैयार किए और स्पेसेस तो बहुत सारे। Now what I will be doing, before going for a heating and cooling loads, I will be selecting this. This is a zone now, you can say. तो यहाँ पे एक basically, if I select this zone, तो यहाँ पे मुझे पता चलता है कि कूलिंग इंफॉर्मेशन क्या देनी है और हीटिंग इंफॉर्मेशन क्या देनी है। यहाँ पे कि जैसे अभी कूलिंग इंफॉर्मेशन के लिए मैं जाता हूँ, तो व्हाट विल बी माय कूलिंग सेट पॉइंट, व्हाट विल बी माय कूलिंग टेम्परेचर, मैं ह्यूमिडिटी कंट्रोल भी दे सकता हूँ। आई विल लीव इट एज इट इज। देन हीटिंग इंफॉर्मेशन you can provide here. Then outdoor information you can provide here. Now if you select a space, तो ये स्पेस में वो आपको कितने पीपल वहां पे रहने वाले पूछता है। कि जैसे
अगर मेरे स्पेसिफाइड अगर यहाँ पे ये एरिया में 10 लोग लेने वाले हैं, सो दैट विल बी ऑक्यूपेंसी मेथड। वेयर एज ये स्पेस में यहाँ पे, सॉरी, इस स्पेस में अभी ये जूम में कन्वर्ट हो चुका है, तो सो आई हैव टू गो फॉर अगेन दिस जोन। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन हम लोग दे सकते हैं कि वो रूम में कितने लोग रहने वाले हैं, स्पेस क्या रहेंगी, कूलिंग इंफॉर्मेशन क्या रहेगी। उसके बाद में यू कैन गो टू हीटिंग एंड कूलिंग लोड्स। Now these are the spaces which are going to be analyzed for green zone. Now building time, this is official or residential, you can see here. Location, अभी मेरा नेट कितना मेरे को मदद करता मालूम नहीं, otherwise I will be typing here Nagpur, sorry, this will be Nagpur, okay, search। तो हो सकता है वो करेगा या नहीं भी करेगा, क्योंकि वो नेट पे डिपेंड करता, एक एस्टेब्लिश नहीं कर पाया तो नहीं करेगा वो। अभी ये डिफॉल्ट सिटी लिस्ट से ये सब उनकी मिलेंगे, हमारे मिलेंगे नहीं हमको यहाँ पे कुछ। तो अगर अभी इंटरनेट मैपिंग रहता है तो हम लोग यहाँ पे एक्चुअली हमारा ये डाल सकते हैं अभी यहाँ पे। सो दिस उस एरिया का वो वेदर बताता क्या है करके। सो फिलहाल तो मैंने नागपुर डाला है यहाँ पे, ओके करो। तो अभी पॉसिबल है कि नहीं पता नहीं। उसने ग्राउंड प्लेन अपना न्यू लेवल 1 कंसिडर कर लिया। उसके बाद में बिल्डिंग सर्विसेज जो है हमारी वीएवी करके उसने कंसिडर कर लिया। यहाँ पे अलग अलग तरीके से ये है। उसके बाद में इसको जैसे मैं कैलकुलेशन करने जाता हूँ तो इट विल बी गिविंग यू द ऑल लोड्स। नाउ यू कैन सी इन द स्क्रीन प्रोजेक्ट क्या है, बिल्डिंग समरी क्या है, और यू कैन सी द पिक कूलिंग एयर फ्लो रिक्वायर्ड हियर टोटल 822। नाउ ये जैसे जोन समरी में भी बताता है इलेक्ट्रिकल लोड्स क्या रहेंगे, वो भी आपको यहाँ पे बताता है। यू कैन सी हियर लोड्स इलेक्ट्रिक क्या रहेंगे, सीएफएम क्या लगेगा। सो दैट इज कैलकुलेटेड। कूलिंग एयर फ्लो कितना लगेगा, ये स्पेसेस के लिए कितना लगेगा, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय अकॉर्डिंग टू विथ रिस्पेक्ट टू योर पोजिशन लोकेशन ऑन द अर्थ, sun path, and the thermal properties of the building. So this is energy analysis. Now I will be explaining the the plumbing zone. Now this is the washroom area. Now I can go for the plumbing fixture also here. So एक आर्किटेक्चरल बिल्डिंग में तीनों चीजें कैसे साथ में रह सकती है। तो ये जो हमारा एचवीएसी हो गया, यहीं पे एक्चुअली प्लम्बिंग भी होता है और यहीं पे हमारा ये भी होता है, फायर स्प्रिंकलर्स भी हम लोग इसी पे लगा सकते हैं। सो नाउ आई विल बी गोइंग फॉर सिस्टम एंड नाउ आई विल बी गोइंग फॉर द प्लम्बिंग फिक्चर्स। तो अभी जो है यहाँ पे हम लोग प्लम्बिंग फिक्चर्स लाते हैं। सॉरी, उसके लिए मुझे यहाँ पे प्लम्बिंग में जाना पड़ेगा। हाँ, ओके, यू कैन सी द मैकेनिकल जोन हियर। तो ये मैकेनिकल का रहेगा, ये प्लम्बिंग में जाएगा तो प्लम्बिंग का रहेगा, सिस्टम एंड प्लम्बिंग फिक्चर्स। सो आई गॉट दैट लोडेड ऑन सम it is, oh actually there are water closets.
Likewise, I have inserted a water closet here. But actually, this is not a particular 100% plumbing platform. Again, I will have to go to plumbing platform. So I'll be using the plumbing template here. This is plumbing platform. Again, I will have to insert that architectural drawing here so that I can use that as a reference. Again, I will be inserting that link here. Now in this area, I will have to apply that plumbing fixture, which I will get directly here. वो फाइल में वो मिलना मुश्किल है. और देखो यहाँ पे हर एक फ्लो के उसके साथ वो मिलता है. जैसे मैंने 1.6 GPF का ले लिया यहाँ पे. This is the one. Then I will go for like sink here. Now you can see I can add the urinals also here. In 3D you can see, sorry ये अभी देखो इसको अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे एक्चुअली फ्लो के साथ वर्चुअल कैलकुलेशन के साथ दिखाता है कि ये सैनिटरी का आउटलेट है, वेयर एज ये पानी का आउटलेट है. सो आई कैन क्रिएट, यहाँ पे भी देख लो अभी आप, ये सिंक है. सिंक में भी अलग अलग फ्लो है अभी यहाँ पे, कि जैसे ये आउटलेट का है, उसके बाद में इनलेट का है, और बहुत प्रकार के यहाँ पे पाइप्स लगा सकते हैं हम लोग यहाँ पे. सो आई विल बी एडिंग सम पाइप हियर. Like in system you can go for adding pipes here. So ये पाइप है, लेकिन उसका क्लासिफिकेशन हमको सब बताना होता है कि जैसे ये 4 इंचेस का रहेगा, और सैनिटरी का है तो मटेरियल्स को लेके जाने के लिए देयर विल बी 4 इंचेस पाइप. एक्चुअली द सिस्टम टाइप विल बी सैनिटरी हियर, and diameter will be like 4 inches, more than sufficient here. Now I will have to add the here. So it's starting from -1 feet. So the pipe here, and then it will be going to 9 feet. Apply. You can see that this is the pipe basically. Now I can connect this sanitary to this pipe. Select this, and you can say connect information, which will be 3-inch pipe. Okay, and like this is the pipe जिससे वो कनेक्ट होने वाला है. सारे फिटिंग के साथ वो अपने आप में ले लेता है, और टोटल फ्लो का कैलकुलेशन भी निकालेगा यहाँ पे वो. अभी अगर यहाँ से मुझे इसका भी एक आउटलेट होगा, सबके साइजेस अलग अलग होंगे. इसी तरीके से, सॉरी, इसी तरीके से यहाँ पे इसका जो कनेक्शन है इनलेट का, वाटर फ्लो का, वो भी पाइप हम लोग यहाँ से पे ले सकते हैं. सिस्टम पाइप. नाउ दिस विल बी 1 inch is sufficient for this inlet pipe, but the pipe will be of type that is called as domestic cold water. Okay, so there are the materials type also here. You can change from here. Now I'll be applying like same way, -1 feet, then 9 feet apply. Now again I will go for this, connecting this pipe, but in another, from another direction.
अभी देखिए ये पाइप का मुझे अगर मैंने सिलेक्ट किया तो ये इनलेट का है 1 इंच का, तो इसको अभी मैं 1.5 इंच का बना देता हूँ. हाँ, नाउ सिलेक्ट दिस वन and go for connect information, and this will be the file with which it will be connected. देखो उसने एक ही चीज को खुद ही कनेक्ट कर दिया और साइजेस के साथ में पर्टिकुलर ये देख के भी कर लिया उसने वहां पे. सो दिस वे यू कैन कनेक्ट एंड द पाइप, इसका हॉरिजॉन्टल पाइप भी हम डाल सकते हैं अभी यहाँ पे, जहाँ पे उसका वो बेसिकली आउटलेट जाएगा 4 इंच का अगर मुझे चाहिए यहाँ पे. सो एंड ग्राउंड, so this will be at the -1 feet. ये नीचे आ गया अभी यहाँ पे. And if you want to connect this one, and if you find connection here, so that can connect to that particular thing also. या फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे कनेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ सकता हूँ. यहाँ पे राउटिंग सॉल्यूशन पूछता है, अगर उसको पॉसिबल हुआ तो उसको राउट करता है. देखो यहाँ पे उसने खुद ही राउट कर दिया यहाँ पे. इस तरीके से वो खुद उसको कनेक्ट करता है. या फिर आप किसी अलग व्यू में जाके भी उसको जोड़ सकते हो अगर वो पॉसिबल है तो. अभी देखो उसको इमीडिएट ये मिल गया, मैंने सिर्फ इसको ड्रैग किया वहां पे. अभी अगर इससे भी पॉसिबल है तो इसको हम लोग जोड़ सकते हैं इसके आउटपुट के साथ, कनेक्ट इंफॉर्मेशन. सो अभी ये जो है आउट का 1.5 इंच का सैनिटरी का ओके करके देखते हैं यहाँ पे पॉसिबल है क्या. तो सो इट विल बी कनेक्टिंग टू दिस सेम पाइप आल्सो. इतना पार्ट समझ में आ गया? प्लीज रिस्पॉन्ड हियर ऑन अ चैट बॉक्स. क्या पूछना चाहते हो तो यू कैन राइट हियर इन अ चैट बॉक्स. This is plumbing, and now these plumbing pictures can be added to the HVAC file, and these two files will be added to a electrical files. So this whole will be a beam model in which सबसे इंपॉर्टेंट अभी इसमें देखो कि ये वाला जो पार्ट मैंने किया था, तो इसमें आउटपुट अभी जैसे ये 3D बनाया है, लेकिन इसके आउटपुट भी निकलने चाहिए, इसके आउटपुट भी निकलने चाहिए. तो मैं अभी एक काम करता हूं, ये फाइल बंद करके मैं आउटपुट कैसे निकलता है, इसको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग कैसे करता हूं बताता हूं. यहां से हम लोग देखेंगे कि इसका क्योंकि अगर हम लोगों ने ये बनाया है तो साइट पे भी जाना भी चाहिए. तो साइट पे क्या क्या रिक्वायर रहेगा, वर्किंग ड्राइंग्स रहेंगे, एग्जीक्यूशन ड्राइंग्स रहेंगे और एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग रहेगा. तो सबसे पहले मैं ये हमारा HVAC निकालता हूँ. ये HVAC में देखो ये अभी हमारा सब तैयार है. How basically that particular drawing sheet will be created. Now you can see here, I can create the cross section areas also. Now like this is the section. अभी मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बना लिया. अभी देखो यहाँ पे ये सेक्शन मैंने यहाँ बना लिया और इसको राइट क्लिक करता हूँ और गो टू व्यू बोलता हूँ. ये देखो यहाँ पे एक सेक्शन दिखा रहा, वो उस पर्टिकुलर जोर का सेक्शन दिखा रहा. लेकिन इसमें से भी कुछ पार्ट को मुझे बहुत अच्छे से देखना दिखाना है. I can go for basically the call out views, and I will say rectangle, and I will go for this call out view only. And you can find here in section that one more call out view is created here in HVAC. You can see here. तो उतनी एरा का डिटेलिंग देगा. अभी ये सारी चीजें मैं एक शीट पे कैसे मैनेज कर सकता हूँ. राइट क्लिक. नाउ एज दिस whole 3D is ready, you can go directly placing your plans here only. Now what will I do? I'll go for the plan. That will be mechanical plan. I'll just click here, and drag here. The plan is here with all these calculations.
Now I want the particular south zone of this, drag this, you can add here. This is the south zone of this area. Now section, I can add the section here. This is a particular section of that particular thing. And this is the call out. Many details, number of details can be added here with the calculations also. Now this set is ready. As you have created a 3D with all technical calculations, this set is ready as a working drawing. What is about the costing? What is about the quantities? You can go to view, schedule quantities, schedule quantities. Now I will be opening just mechanical one and not the architectural one. Now what the required thing is here, air terminal. Okay. So air terminal, I will be needing count, I will be needing flow, I will be needing the manufacturer name or the whatever it is, system type, system name, size. So this is all ready here. You can add anything here. Now you can find here, you have got the air terminal schedule is ready here. Okay. Again, I will go for the view, schedule quantities, schedule quantities. Now what I will go? I will go for the duct fittings or the ducts here. Okay. What I will be needing here? I will be needing the area. If diameter is there, then that will be needed here. Count. Then what? Width of particular duct. There will be a size. So velocity passing through it, you can add here. Then what? Size. So this is all here. The name of the duct, family name, flow, I will be needing here. Then family and family type, this will be needed here. Okay, now this is ready. Your sizes are ready. You can count them. You can count the total CFM flow here. And the great thing is that in sheet, which is ready here, I can go to sheet and I can add this schedule quantities by dragging here. You can find that particular all things can be added here. Not only you can create a sheet, but as well as the quantities and all that. This is the output. That's why it's called as a BIM, Building Information Modeling. आपने सिर्फ 3D नहीं बनाया, आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, आपने सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाया, उसके आउटपुट भी उतनी स्मार्टली वो देता है. अगर मैंने यहाँ पे काम करते करते थोड़ी देर मेरे पास ध्यान में आया कि आई वांट टू चेंज समथिंग हियर, तो मैं यहाँ पे प्लान पे जाता हूँ और ये पार्ट को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ पे. अभी थोड़ी देर के लिए ऐसा समझ कर लो कि दिस इज द सेक्शन और मैं ड्रैग करता हूँ सेक्शन को भी यहाँ पे इधर. अभी सेक्शन को मैं यहाँ लेके आता हूँ. आप अगर इस सेक्शन में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वो सेक्शन उसने चेंज कर दिया है. दैट विल इनकॉर्पोरेट डायरेक्टली देयर. दैट इज द स्मार्टनेस ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. हम लोग साइट पे पहले आर्किटेक्चर मॉडलिंग करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, कॉलम बनाते हैं, फिर डक्ट गया कि उसको तोड़ते, इलेक्ट्रिकल ट्रे के लिए हमारे पास जगह नहीं होती. दिस ऑल थिंग्स कैन बी प्लान हियर एंड मैनेज ऑन द साइट. देयर विल बी टू टीम, planning team as well as the execution team. They both will be connected through these softwares. No one need to go to office. वो वहीं पे बता के और इन सबको एक्चुअली कोरिलेट करने वाली चीज होती है बीम 360. ये सारी चीजें बीम 360 नाम के सॉफ्टवेयर में एक साथ आता है और उसी पे सारे इंजीनियर्स एक प्रोजेक्ट पे काम करते रहते हैं. अगर टाटा के 10-15 प्रोजेक्ट चालू है तो टाटा के सारा का सारा बीम तैयार रहेगा. हर एक साइड पे उसके एग्जीक्यूशन टीम रहेंगी, ऑफिस की एक टीम रहेंगी, एंड दे विल बी कम्युनिकेटिंग टू ईच अदर वाया दिस सॉफ्टवेयर्स, नॉट ओनली विद द ड्राइंग बट द कैलकुलेशंस आल्सो. आने वाला जमाना बीआईएम का भी है. बड़ी बड़ी कंपनीज के आउटसोर्सिंग तो आ ही रहे हैं, लेकिन टोटली हमारे यहाँ भी बड़े बड़े बिल्डर एक आध साल में इसको अडॉप्ट करेंगे. एंड ईच फैकल्टी इंजीनियर्स विल बी हैविंग अ स्पेस इन ईच सेटअप. चलो बताओ, अभी मैं थक गया हूँ बोलते बोलते. Let me know your difficulties, queries, anything you want to suggest, anything you want to share, anything you want to ask. Please, now you can open with your mic. You can ask me or chat me here. Let me know. Hello.
किसी के पास पूछने के लिए कुछ है? प्लीज पूछिए, मैं इसके आगे के बारे में भी बता सकता हूँ अगर किसी को जानने की इच्छा है तो। हेलो। हाँ, क्लास डिटेक्शन। हाँ, या यू कैन कॉस्ट दिस थिंग्स, इसी में हम लोग उसको कॉस्ट डाल सकते हैं। मुझे मुझे सॉफ्टवेयर डाउनलोड लिंक करने की गरज नहीं है, वो ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है। जस्ट राइट डाउन इन गूगल सर्च फॉर ऑटोडेस्क स्टूडेंट सॉफ्टवेयर, देन गो फॉर क्रिएटिंग अकाउंट। अगर आप कॉलेज के स्टूडेंट हो तो आपका आई कार्ड आपको वहां पे परमिशन के लिए देना पड़ेगा, उन्होंने बहुत स्ट्रिक्ट कर लिया है स्टूडेंट के लिए। और एजुकेटर्स के लिए सब चीजें फ्री है, 3 साल तक कम से कम, हर साल सिर्फ रिन्यू करना पड़ेगा। और अभी जो मैंने क्वांटिटीज निकाला है, मैं इसको एक्सपोर्ट कर सकता हूँ एक्सेल में, और वहां पे रेट, यहाँ पे भी रेट डाल सकता हूँ, वहां पे भी रेट डाल सकता हूँ, और उसका इमीडिएटली हमको निकाल के देगा वो। अब जिनके पास में पीसी नहीं है तो उनको मैं कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो लैपटॉप और पीसी के अलावा कोई वर्क नहीं करता, मोबाइल पे वर्क नहीं करता है। क्लैश डिटेक्शन टेस्ट जो है इलेक्ट्रिकल का, कल मैं इसमें ज्वाइन करने के बाद पूरा एक बीम मॉडल बनाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको क्लैश डिटेक्शन बताऊंगा 100%। अब जिनके पास में नहीं है, उनके लिए मैं वेरी सॉरी फील करता हूँ। जैसे अभी मैंने यहाँ पे, मैं आपको फिर से शेयर कर रहा हूँ, जैसे मैं कॉस्टिंग का अगर देखें आप यहाँ पे, तो शेड्यूल कॉस्टिंग में जैसे अभी ये फाइल है, मैंने यहाँ पे एक शेड्यूलिंग की फाइल बनाया था, जैसे ये एयर टर्मिनल्स है। अभी इसको मैं एक्सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं उसको, और एक्चुअली इसके कैड फॉर्मेट्स में फाइल जाते हैं, इसका 2D ऑटोकैड में जाएगा, और ये जो है रिपोर्ट्स, ये शेड्यूल में जाएंगे, जो एक्सेल में खोल सकते हैं आप इसको। सेव करता हूँ अभी मैं यहाँ पे, ओके करो। अभी मैं इसको मिनिमाइज करके इसकी फाइल खोलूंगा एक्सेल की, और उसमें इसको इंपोर्ट करूंगा। मैं शेयर करता हूँ आपको एक्सेल की फाइल। अभी देखो एक्सेल की फाइल का और खोल दिया मैंने, जो मैंने वहां पे किया था उसको डायरेक्ट मैं ओपन कर सकता हूँ। सिर्फ ऑल एक्सेल की फाइल की जगह यहाँ पे ऑल फाइल्स करना पड़ेगा। और अभी मैंने यहाँ पे जहाँ पे भी डाला है उसको, मेरे ख्याल से कहाँ डाला था मैंने, हाँ HVAC में डाला था। HVAC वंस कहाँ मैंने एक्सपोर्ट किया उसको, ये HVAC कहाँ बना है, हाँ रेविट MEP HVAC में, मैं वहाँ पे खुलता हूँ। ये देखो यहाँ पे एयर टर्मिनल का शेड्यूल है, ये मैंने ओपन कर दिया एक्सेल में। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये फिनिश, दिस इज रेडी। नाउ यू कैन टाइप रेट हियर, और यहाँ टाइप करके आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, यू विल बी गेटिंग द कॉस्टिंग हियर। इट इज सो इजी। समझ में आया? हाँ, अभी आप लोगों को अगर आप प्रैक्टिस करने वाले हो और रिज्वाइन करने वाले हो, तो आई विल बी अवेलेबल हियर। बट if you don't have that particular softwares and hardwares, then
My class for today, HVAC and plumbing, is completed here. Tomorrow, I will be explaining the fire fixtures as well as the purely electrical class will be there tomorrow. 100% electrical. Then I will be merging the each and every model in the same model, and I will be explaining the class detection test. एटलीस्ट उनको अवेयरनेस भी आ गया तो पता चलेगा कि कितने जॉब्स इसके बेस पर करके कंपनी है नागपुर में 4-5 साल से. उसके अलावा 3-4 कंपनीज लॉकडाउन के पहले नागपुर में एस्टेब्लिश हुई थी. ऐसे 5 कंपनीज है जिन पे बीएम बेस प्लेसमेंट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के. ओके सर. और अभी वो अमित राव ने मुझे कुछ ये भेजे है, आपको भी शायद भेजे होंगे जॉब प्लेसमेंट के लिए. तो बीम बेस बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल रहेंगे लॉकडाउन के बाद 100% रहेंगे. दिस इज अ न्यू एरिया वेयर दिस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कैन बी प्लेस वेरी इजीली, प्रोवाइडेड उनको सब्जेक्ट का भी नॉलेज होना चाहिए और सॉफ्टवेयर का भी. सॉफ्टवेयर का. ओके. हाँ. ओके सर, थैंक यू फॉर टुडे. वी विल कंटिन्यू फॉर. हाँ, सैलरी मैं बता नहीं सकता, वो एम्प्लॉयर ही बता पाएगा कितनी रहती करके. 25,000 वगैरह होती है. अच्छा. और मैं ऑनलाइन सारे जो कोर्सेस है, वो ऑनलाइन जो कोर्सेस है मैं बहुत मिनिमम फीस में कंडक्ट कर रहा हूँ. 40 डेज के वगैरह मेरे है और ऑटोडेस्क सर्टिफिकेशन के साथ में मेरे बैचेस चालू है. इफ समवन इज इंटरेस्टेड दे कैन कांटेक्ट मी डायरेक्टली. ओके. So tomorrow there will be electrical engineering part of this particular MEP, and then there will be क्या होता है कि सारे चीजें एक बार मर्ज करे, जैसे आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर, MEP model, then that whole model will be called as BIM model, so that you can visualize that some clash detection is there, that you have to change the duct size, so what you have to change the path. ये पार्ट में आपको कल पढ़ाऊंगा इसमें. ओके सर. और कल ही हम और थोड़ी कोर्सेज के बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेंगे, मतलब एट द एंड ऑफ द सेशन. ओके. थैंक यू स्टूडेंट. ओके, थैंक यू सर. पेशेंसली सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सर. ओह, थैंक यू. Okay, participants, we will continue the workshop on tomorrow 11 a.m. Thank you.